हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द परफेक्टिस्टा। सो आज हम बात करेंगे एज आई हैव प्रॉमिस्ड अ 5 days आई मेकअप कोर्स। सो हेयर आई एम टू बिगिन विद। आज हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आई, क्योंकि जब तक हमें आई का स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा एंड अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट नोन टू ऑल द पार्ट्स वी विल नेवर कम टू नो कि कौन सा शेड कैसे अप्लाई करना है एंड विच ब्रश आर वी गोइंग टू यूज़। सो हेयर वी बिगिन। ऑल राइट पीपल, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड दैट इज़ आई से द मेजर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज़ द eyelid, and this covers the most area. I'm also going to show you this area to make it more clear on the factual eye, and here it is. All right. So we are going to use a flat brush here. This is the flat brush, right? We are going to apply the eyeshadow here. सबसे major part लगता है eyeshadow का यहाँ पे. Secondly, flat brush से जो भी pigments होते हैं eyeshadow के, they stay as always and they are just applied in this form. अगर आप rounded shape brush लेते हो तो while you're applying it, those pigments just get fall, like they just fall down और इतना eyeshadow नहीं लगता है. We need to use more and more amount, and secondly it falls just below the eyelid and it's very bad to clear it, and just the whole makeup gets smudged, right? So this is the right brush we use for the eyelid. All right, second part में move on करेंगे. That is also a very important part, of course. eye के सारे parts are only very important. All right, so moving further, this is the V shape, that is, we could say, the center of the eyebrow, or you can say the center of the crease till the end of the eyebrow. This becomes a rough V shape. So basically in a simple or layman language हम इसको outer part बोलते हैं. And to apply the eyeshadow there, we basically use this type of brush, that is you can say a half doom brush, right? Because इस area में this is bit dense and it is almost into the crease, so it applies very easily and it blends very easily. All right, last fact about this is you can apply the shimmer here, the medium to dark eyeshadow shades. I basically prefer to apply shimmer inside and the matte or the medium and medium to darker shades in this V area. Yes, all right, moving on to next. That is the crease area. This is this line that is formed, or the depth that is formed in your eye. You can see it here actually, well, rather than this eye, because I'm opening the eye very properly. There are some people jinke crease is not formed naturally, so we can just fake it out, like just applying right in the center of the eyelid and the this eyelashes. So you can also fake it out. Brush that we are going to use is this. This is a perfectly dome brush, right? It could be of medium size, it could be of larger size, it could be of smaller, of course. And this is a very good brush because it is in depth. So this is actually where the eyeshadow blends very beautifully, right? तो इसलिए हम यूज़ करते हैं द क्रीज लाइक ब्रश. ओके, कलर्स के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली मीडियम कलर्स लेते हैं आई शेडोज़ के, सिंस हमने एवरीडे लुक लेनी है जिसमें हम ब्राउन कलर ले सकते हैं. इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू यू. यू कैन मेक इट मोर डार्कर अगर तुम्हें ड्रामेटिक लुक देनी है तो. अदरवाइज़ हम बहुत मीडियम कलर लाइक आई शेडोज़ लेते हैं. आई यूज़ दैम बेसिकली. सो वैसे फॉर वेरी कॉमन थिंग यू शुड यूज़ शेडोज़ और द कलर्स दैट आर 2 shades डार्कर देन योर स्किन. इट गिव्स अ वेरी गुड इफेक्ट. ऑल राइट, अगले पार्ट पे चलते हैं. Yes, moving on to the next part. Okay, so now is the transitional area. This area, like we usually do not conclude it very important. और जो professional makeup artist होते हैं, yes, it is very important for them. So anyhow, let's discuss it. Transitional area is just above the crease and below the eyebrow or the brow bone. That is this area. Yes, it is not बिल्कुल आईब्रो के साथ. इट हैज़ अ बिट डिफरेंस एंड अबव द क्रीज, राइट? क्रीज और ट्रांजिशनल एरिया को हमेशा डिफरेंशिएशन करना ही होता है. लाइक दिस ऑलवेज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू. क्या होता है वी बेसिकली यूज़ पहले तो दिस इज़ द ब्रश, दैट इज़ अ डूम शेप ब्रश अगेन, दैट जो हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये डेंस पार्ट है. दैट इज़ वाई वी यूज़ इट, सो दैट इट अप्लाइज वेरी ब्यूटीफुली एंड इट इज़ ब्लेंडेड वेरी नाइसली. और कलर्स की बात अगर हम करते हैं तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ मीडियम लाइट शेड कलर्स यहाँ पे. आई लाइक बेसिकली लाइट शेड कलर्स जैसे हम रूटीन डेज में करते हैं. हियर पीपल, I'm not using any eyeshadow. I haven't used, and this is the bare eye. I haven't used any concealer, anything. Nothing is used in my face. Yes, except the lip shade I have used. This is to make it the parts very clear to you.
All right, so now a very common thing, that is the brow bone we basically say, और हम बोलते हैं इसको highlight. So बोलते हैं इसको हाईलाइट. सो इसमें वी कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ ब्रश, फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं. देन वी कैन यूज़ अ डूम शेप ब्रश, एनी विच एवर यू फाइंड कंफर्टेबल. आई यूज़ दिस वन. इट्स अ बिट डूम बट इट्स नॉट वेरी, इट्स वेरी पफी, राइट, क्योंकि मुझे ये इजी रहता है टू ब्लेंड इट. टॉकिंग अबाउट द कलर्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत ही लाइट कलर्स लेते हैं, सो दैट वी डू नॉट गेट अ वेरी ड्रामेटिक लुक. एंड पूरा आई, इफ़ यू आर यूजिंग अ वेरी डार्क कलर ऑन द हाईलाइट्स, तो जो पूरा आई मेकअप है दैट बिकम्स वेरी लाइट एंड द होल मेकअप लुक्स वेरी वियर्ड, राइट. सो यहाँ पे हम लेते हैं क्रीमी कलर्स, यू अंडरस्टैंड. इफ़ वी हैव अ वेरी फेयर स्किन टोन, फेयर टू मीडियम स्किन टोन, वी बेसिकली यूज़ द पीच कलर, द क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, yes. Otherwise, if you have the dark skin shade, or not a dark, we can say the wheatish skin tone, then you can use the cocoa brown color, like these colors. Some colors that just bring out the whole makeup of your eye. This is what is used in the brow bone, yeah. Alright, so moving on to the next, we have this corner, that is tear thumb corner of the eye, if you can see properly. Yes, see properly. Yes, यहाँ पे if we talk about the Indian skin, we basically use the shimmer, and actually not Indian, everywhere it's preferred to use shimmer here more. And because the eye looks very very broad, like I guess matte would look very dull here. Alright, so this is the one brush that we basically use, that is the flat brush, because we'll start it from here and just move upwards. It is because the eye will become more larger and the look will be immensely beautiful. This way it's always done. Yes, and I basically use a very very light colors, because actually not light, you can say the cool colors, the champagne colors we basically use. Yes, because they look very very pretty and very attractive. Alright, so next we are going to discuss about the lower lash line, and this is just below the eyelashes, lower eyelashes. So you can use any kind of brush here, but I prefer to use a pencil brush here, which is very feasible actually, and it's very easy to use it like this. And talking about the colors, we can use any color, जैसे कोई भी डार्क कलर. एक्चुअली द आइज़ लुक वेरी ब्राइट अगर हम यहाँ पे डार्क कलर्स यूज़ करते हैं, सच एज डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन. it gives a very different look and very pretty one. So we apply it and then we just smudge it like this, so that it does not form a paste line or something very cracky here, right? So it gives a very good look. Okay, now is the last one. अब हम बात करेंगे जैसे a part that is very very sensitive, ठीक है. तो ये part है the waterline. This is the waterline. See, I have just brought it below. This is the fleshy thing, right? This is the yeah. इसमें I would recommend you never use a brush. It's okay, some people use a brush, that's even fine, but we have to use it very very carefully, ठीक है, क्योंकि if it just stabs our eye तो वो सब reddish हो. So avoid using a brush. It's okay if you are well, you have a good hand, it's okay, आप यूज़ कर सकते हैं. Otherwise I have a very good option, that is a pencil, right? So we can use a pencil, of course. Yes, इसका एक बहुत अच्छी trick we have. Take this pencil and just dip it up in the gel, gel eyeliner, and then you can slightly
pull this like this and then you can apply. Of course it's not going to hurt क्योंकि वो eye and actual like there is a distance. अब नहीं लगेगा, of course, right? Like this तो you can use a brush also, yes, otherwise you can use it this way. इसको मैंने dip नहीं करा है, otherwise you can just dip it in the gel eyeliner and then you can slightly pull it up here. इसका और भी अच्छा, if you want to just smudge it, use the pencil brush and उसको हल्का हल्का ऐसे करके we can smudge it. Okay guys, so this was the structure of a eye and I hope आप सबको पता लग गया होगा कि where to apply what and कौन सा shade would suit better in on which part of the eye. So we'll continue with the more and more eye makeups and tomorrow we are going to do a very basic or say beginners eye makeup. So wait for the tutorial and we'll meet tomorrow soon. Bye bye, take care.